अगर मैं आपसे पूछूं कि आज कॉर्पोरेट्स में महिलाओं की सिचुएशन 10 साल पहले से बेहतर है, 10 साल पहले जैसी ही है, या फिर 10 साल पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है, तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिए। While women are joining corporate jobs at higher numbers, the complexities and issues related to work through gendered lens have become more magnified. Laws introduced to help women have ended up creating even bigger problems. Dear India Inc., in our last episode, we spoke about the maternity benefit law and how it is becoming a deterrent in hiring women in corporates. We looked at the problem. And today, we are attempting to give you some solutions. Maternity benefit law की वजह से employers ने या तो उस एज की महिलाओं को हायर करना ही बंद कर दिया, या फिर उन्हें की पोजीशंस पर लेना बंद कर दिया, या फिर उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी जा रही अब जिसकी वो हकदार हैं। तो कैसे इस मसले का हल ढूंढा जाए? How do we fix this? Can we fix this? कुछ सॉल्यूशंस हम आपको दे सकते हैं। कई हायरिंग प्रोफेशनल्स कहते हैं कि इंडस्ट्री में ब्लाइंड सीवीज लाने की जरूरत है, जो कि जेंडर और नाम नहीं रिवील करते। दे ओनली टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ द कैंडिडेट। दिस विल हेल्प कट डाउन अनकॉन्शियस बायस एट हायरिंग लेवल। कंपनीज को शुरू से ही एक मैटरनिटी बेनिफिट फंड अलग से रख देना चाहिए, जिसे रेगुलरली मॉनिटर करते हुए ग्रो किया जाए। अगर आपने एंट्री लेवल पर एक काबिल महिला को हायर किया है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इस कैंडिडेट की पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है, and how this candidate can be supported by the company in the long run. You need women mentors for that process. Well, I am a strong advocate for equal parenting. और ये इक्वालिटी कॉर्पोरेट्स से ही शुरू हो सकती है, जब वो मैटरनिटी या फिर पैटर्निटी लीव की बजाय parental leaves देना शुरू करें. Like in the case of Sweden, where this leave is shared by both parents. It grants the highest number of parental leaves among Nordic countries, that is 480 days, out of which 90 days are solely reserved for each parent and cannot be transferred. Remaining days can be shared. Finland grants an equal number of maternity and paternity leave, and each parent gets 164 days of leaves. नॉर्वे ने इंट्रोड्यूस किया है डैडी कोटा, जो कि एक्सक्लूसिवली फादर्स के लिए होता है और जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। In Germany, parents can take up to 14 months of paid parental leave and receive 67% of their regular salary. In Canada, eligible parents can take up to 35 weeks of paid parental leave. New Zealand law allows parents to take up to 22 weeks of paid parental leave. Iceland, Portugal, Denmark, ये तमाम ऐसी कंट्रीज हैं जहां पिता की अहमियत को मां के बराबर रखते हुए लीव्स दी जाती हैं। यहां जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं की जाती है। इंडिया में 2017 में पैटर्निटी बेनिफिट बिल लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये नाकाम रही। इसके तहत 15 दिन की पेड लीव अवेल की जा सकती है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिल का भी सारा भार एम्प्लॉयर को उठाना होगा और ये एक महंगा सौदा होगा। वैसे मैं आपको ये भी बताती चलूं कि मैटरनिटी बेनिफिट बिल से सभी का फायदा हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। India's maternity leave law currently benefits fewer than 1%. Yes, you heard it right. Fewer than 1% of all women, according to a study published by the Independent Review, which says that the bill is relevant to only a tiny share of the Indian population, given that a large percentage of India's women are not in the labor force. And most of the women who do work operate in the unregulated, informal sector. Only few are eligible for protection under India's Maternity Benefits Amendment Act of 2017. इस पूरी प्रॉब्लम में एक सोशल इम्पैक्ट भी है। Women might postpone starting a family, which has associated issues of infertility, late and complex pregnancies, difficulty in managing the demands of parenting at a later age, etc. और क्या किया जा सकता है? Flexible working hours, creche support for young mothers, work from home, hybrid options, nannies or caretaker travel allowance when a mother is on work trip are some of the options too. Companies like Wipro have flagship programs such as Back to Work for women coming back after their maternity break,
They are mentored and trained to get back into the workforce. These are programs driven by senior leadership and are part of the DEI initiatives also. The managers must speak to the women employees, offer them opportunities, keeping aside their unconscious bias, benevolence bias, and include them in their own decision making as well. But it all really boils down to a mindset change. Breaking gender stereotypes and patriarchal behavior are a necessity. There is a lot of hope from Gen Z and millennials, for they do look at parental roles differently. But the mindset has to change at the leadership and the managerial level as well.